Hello students, welcome back. Class 8 Chapter 13 Part 2. In this part, student, we will discuss about speed of sound, reflection of sound and uses of echo, and what is audible, inaudible ranges of sound, what is noise and music, harmful effects of noise pollution and its sources, and how we can control the noise pollution. Let's start Chapter 13 Part 2. Speed of sound. Speed of sound in a medium is the distance traveled by sound in 1 second. एक सेकंड में जितनी साउंड वेव्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसकी क्या कहलाती है? स्पीड. द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम. साउंड की स्पीड मीडियम के जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है उसके नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. कैसे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? सॉलिड में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसेस में. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, एंड ऑन द अदर हैंड द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. In this way, the speed of sound depend upon nature and temperature of the medium. It is measured in meter per second. Speed of sound can be measured in meter per second. The SI unit of speed of sound is meter per second. Reflection of sound. When sound waves hits an obstacle such as wall or mountain, it gets reflected by an obstacle. This is known as reflection of sound. डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा माउंटेन्स में ऐसा होता है कि हम आवाज़ लगाते हैं और हमारी आवाज़ बैक होती है. दैट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड वेव जब भी किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं दे कम बैक. दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ आल्सो नोन एज इको. साउंड के रिफ्लेक्शन को हम इको भी बोलते हैं. एंड इको कैन बी हर्ड ओनली व्हेन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 17 मीटर. इको तभी सुनाई देगा, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड हमें तब सुनाई देगा जब सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर. यानी कोई रूम, कोई होल जिसकी डिस्टेंस इतना है 17 मीटर, उसमें हमें इको सुनाई देगा. वी कैन हियर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. Absorption of sound. There are some substances such as curtains, gunny bags, carpets, and false ceilings are used to absorb the sound. These materials are widely used in theatre and auditorium to prevent the reflection of sound. क्योंकि ऑडिटोरियम में बार बार अगेन एंड अगेन साउंड के रिफ्लेक्शन से ऑडियंस को साउंड क्लियर नहीं होती, सुनाई नहीं देती, इसीलिए वहाँ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. यूजेस ऑफ इको. इको इज़ यूज्ड इन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी. Bats use the principle of echolocation to avoid hitting against obstacles in their paths. Sound produced by musical instrument. We are all familiar with various musical instruments. Depending upon the vibrating part, which are the source of sound, they are categorized into 3 types. For example, string instruments produce sound by vibrating strings such as guitar, sitar, etc. Wind instruments produce sound by vibrating air column such as flute, shehnai, etc. Membrane instruments produce sound by vibrating the membranes such as dholak, tabla, etc. Sound produced by human. In human beings, sound is produced by voice box. It is located at the upper end of windpipe. Let's see the diagram of voice box. This is the diagram of voice box. The sound produced is controlled by 2 thin membranous structure known as vocal cord.
that stretch across the larynx. These vocal cords have a narrow slit through which air is blown in and out. When we speak, air from our lungs is pushed up through the trachea to the larynx. When this air passes through the slits, the vocal cord begins to vibrate and produce sound. In this way, our voice box can produce sound. Audible and inaudible sound. A normal human ear can detect the sound in range of 20 Hz to 20,000 Hz. This is known as audible sound. Dear student, नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकते हैं. इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी या इससे कम फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स को हम नहीं सुन सकते. तो दिस रेंज ऑफ साउंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज़ नोन एज ऑडिबल साउंड, एंड द साउंड विद द फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज़ नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड. 20 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स को हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज इनऑडिबल साउंड्स. एंड द साउंड्स विद द फ्रिक्वेंसी अबव द 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स. 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली साउंड्स को क्या नाम दिया जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड. दैट इज़ आल्सो इनऑडिबल. Music and noise. The sound that produce a pleasing sensation to ear is called music. Dear student, ऐसी sounds जो हमारे ears को सुनने में बहुत अच्छी लगे, pleasing हो, that is known as music. And the sound that is not pleasing to ears and causes irritation is called noise. Sources of noise pollution includes road traffic, jet planes, कंस्ट्रक्शन साइट्स एक्सेट्रा. आप देखते हो कि इन सभी प्लेसेस से एक्सेस में नॉइस आता है विच कॉज इरिटेशंस. नॉइस पोल्यूशन में कॉज टोटल लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक एक्सेट्रा. अगर कंटिन्यूस हम बहुत तेज़ शोर में रहते हैं तो इससे हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो लूज़ हो सकती है, स्ट्रेस होगा, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगेगा, हेडेक की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी. ऑल दीज आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन. स्टेप्स ऑफ कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन को हम वेरियस स्टेप्स से कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट, सेटिंग अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स. लाउड स्पीकर्स को यूज़ करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इतने डेसिबल से ज़्यादा के लाउड स्पीकर्स यूज़ नहीं होंगे या इतने टाइम के बाद यूज़ नहीं करना है. तो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन. ऑटोमोबाइल शुड हैव इफेक्टिव साइलेंसर्स. ऑटोमोबाइल्स के अंदर इफेक्टिव साइलेंसर्स लगे होने चाहिए ताकि जो ट्रैफिक की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके. होम अप्लायंसेस शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड. होम अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, जूसर, ग्राइंडर, उनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस होनी चाहिए ताकि उनमें से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट ना हो. इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी लोकेटेड एट significant distance from residential area. इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन क्रिएट ना हो. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 13. आई होप all concepts are clear to you. Have a nice day, students.